Good morning, students. Now, first passage is the politics of pessimism. The first two fifth questions ने complete the phrases, list of phrases use करके अपने sentences complete करने हैं. So the first देखो newspaper headlines and TV और radio news bulletins इन्हें complete करना. इधर आंसर है D. Try to make us believe mistakenly that we are in a new era. सब तो पहला तो अपने जिन्ने भी पैराग्राफ्स ने उन्होंने नंबरिंग दे लो. टोटल 4 बन रहा. फर्स्ट सेकंड थर्ड हैगा डेल्यूडिंग द जनरल पब्लिक. फोर्थ बनूंगा फेयर एंड सर्वाइवर वाला. ठीक है जी. तो फर्स्ट द आंसर है फर्स्ट विद द फर्स्ट लाइंस. देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस और टीवी रेडियो बुलेटिन्स वुड हैव us believe erroneously that a new age has come upon us. erroneously मतलब झूठे तरीके नाल mistakenly. ठीक है, ਉਹਦਾ ही एक लाइक सिनोनियम कह सक सिनोनियम नहीं आ बट ਇਹਨਾਂ ਦਾ सिमिलर ही सेंस है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਏਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, that a new era ਕੀ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, so the answer for first is D. ठीक है जी. सेकंड देखो doom mongers are popular because people. The answer for second is H. Are natural pessimists and worriers. ਇਹਦਾ आंसर है second paragraph च. देखो it can I believe be said with some certainty that the doom mongers will never run out of business. कहते भी कहा जा सकता है ਜਿਹੜੇ doom monger ने कदे भी out of business नहीं जाएंगे. ठीक है, मतलब वो हमेशा पॉपुलर ही रहेंगे. क्यों? बिकॉज ह्यूमन नेचर हैज़ एन इनक्लीनेशन फॉर पैसिमिज्म एंड एंगजाइटी. कि ह्यूमन नेचर की है कि वो इंक्लाइन होंगे पैसिमिज्म ते एंगजाइटी वाल. ठीक है, सेम गल इत्थे कही गई है. एंगजाइटी होना किसी चीज़ के लिए टेंशन होना वरी होना. ठीक है, सेम गल एच विच कही गई है. एच ऑप्शन विच दे आर नैचुरल पैसिमिस्ट्स एंड वरियर्स. थर्ड देखो today catastrophes. The answer for it is I. Are more immediate. ठीक है, देखो it's also in your paragraph number 2. But what makes the modern age so different is that the catastrophes are more in your face. इत्थे in your face ਹੁੰਦਾ like ज़्यादा जल्दी आ रहा. ठीक है, मॉडर्न एज ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों आ क्योंकि कैटास्ट्रफ्स आर मोर इन योर फेस. कि ज़्यादा कैटास्ट्रफ्स आ रहा है दैट मीन्स वो ज़्यादा इमीडिएट हो गया. ठीक है, सो द आंसर फॉर थर्ड इज आई. फोर्थ देखो टू पॉलिटिशियंस पीपल्स इंक्लिनेशन ऑफ फियर. द आंसर इज के इज समथिंग दे कैन मेक यूज ऑफ एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 3. ठीक है जी. देखो इतने फर्स्ट जी लिखा है ऑल टू ऑफन when politicians want to change the status quo they take advantage of people's fear of unknown and their uncertainties about the future. ठीक है कि ये कहते पॉलिटिशियन जो कुछ चेंज करना चाहते हैं कि तो की करते हैं लोगों के फेयर का फायदा उठाते हैं. सेम गल इत्थे कही किस सेम गल इत्थे कही गई है टू पॉलिटिशियंस पीपल्स इंक्लिनेशन ऑफ फियर. ठीक है, दैन ऑप्शन पे आ जाओ इज़ समथिंग दे कैन मेक यूज़ ऑफ. ठीक है, और एडवांटेज लेना उस चीज़ को यूज़ करना. ठीक है, उस चीज़ की एडवांटेज ले लेना. सो द आंसर फॉर फोर्थ इज के. फिफ्थ देखो द गवर्नमेंट. द आंसर इज जे गैट वट दे वॉन्ट बाय डिसीविंग द पब्लिक. कहते गवर्नमेंट पब्लिक नू डिसीव करके पब्लिक नू लाइक धोखा दे के वो चीज़ पा लेंदी है जो वो चाहती है. ठीक है, हुण ये देखो ये हैगा तुहाडे पैराग्राफ थर्ड विच ही. This allows the government to get what it wants while at the same time fooling the public into believing that they have got one over the government. कहते गवर्नमेंट की है ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ get what it wants ਕਿੱਦਾਂ by fooling the public. पब्लिक ਨੂੰ ਫੂਲ ਕਰਕੇ पब्लिक ਨੂੰ डिसीव करके. सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज जे. सिक्स्थ देखो the housing development example shows that. the housing development example की शो कर दिया. ठीक है, देखो आ जाओ थर्ड पैराग्राफ पे. ਇਹਦਾ ਆंसर हैगा डी. आर ईजी टू डेल्यूड. डेल्यूड करना मतलब किसी को धोखा देना या चांसेज ले लेना कह सकते हैं आप. कि जोड़े क्वेश्चन है द हाउसिंग डेवलपमेंट एग्जाम्पल की शो कर दी है कि जोड़े पीपल ने उन्होंने बहुत ईजीली लिया जा सकता है बहुत चांसेज. ठीक है, आ देखो इतने लिखा है थर्ड पैराग्राफ दे ही अगे जो फर्दर थर्ड पैराग्राफ के अंदर थर्ड है. A similar use at a local level will further illustrate how easily people's base fears are exploited. A common practice is to give people a number of options, say in a housing development,
ठीक है भी सब तो कॉमन प्रैक्टिस की है हाउसिंग डेवलपमेंट च जो लोगों को काफ़ी सारी ऑप्शनस दित्तियां जांदियां नेगियां इस चीज़ का पर एम की हुंदा कि पीपल नू एग्री करना सिग्निफिकेंट मॉडिकेशनस लई ठीक है पर उस च की होणगियां डिसरप्शन उन्हां दी लाइफ नू पॉसिबली एक्सट्रा एक्सपेंडिचर भी होगा ठीक है पर ਜਿਹੜੇ इंडिविजुअल्स नेगे ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵਰਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਲਈ ਵੀ ਫੀਅਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर 6th is D 7th ਦੇਖੋ which one of the following statements is true according to the passage the answer is C देखो सी ऑप्शन कह रही है मार्केट रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड एज अ मीनस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल्स फियर आ देखो इत्थे लिखा है थर्ड पैराग्राफ के अंदर ही जो थर्ड आता पैरा एवरीथिंग इज अचीव्ड अंडर द गाइज ऑफ मार्केट रिसर्च के नाम पर हर एक चीज़ अचीव कर ली जाती है ठीक है बट इट इज़ ऑबवियसली अ ब्लैटेंट एक्सरसाइज इन द मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स फेयर लोगों के फेयर्स नू लाइक इस तरीके गलत तरीके यूज़ किया जाता है मार्केट रिसर्च का की दे के एक झूठा करके नाटक करके ठीक है मतलब लोगों के जोड़े फीयर्स ने उन्होंने यूज़ किया जाता सेम गल ऑप्शन कह रहे हैं कि इट्स अ टेक्निक यूज्ड एज अ मीनस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल्स फीयर 8th देखो द engines of genuine are ठीक है everything is achieved under the guise of market research but it is obviously a blatant exercise in the manipulation of people's fear कि लोगों के fear use करके ही की करते हैं वो अपने यूज करते हैं ठीक है मार्केट रिसर्च करते हैं उन्होंने fear का एडवांटेज चाहते ठीक है दैन 8th क्वेश्चन देखो द engines of genius are ठीक है engines of genius की ने ठीक है आर द ऑप्शन इज सी ड्रिवन बाय फीलिंग्स लाइक फीयर ठीक है देखो इत्थे आंसर 8th का आंसर है तुहाडे 4th पैराग्राफ दे अंदर जिहड़ा सैकेंड पैराग्राफ आंदा नॉट सरप्राइजिंगली फीलिंग्स लाइक डाउट फीयर एंजाइटी व्हेन and pessimism are usually associated with failure yet if properly harnessed they are driving forces behind success the very engines of genius कि ये जिहड़े engines of genius ने की ने driving forces ने ठीक है ते किहड़ियां फीलिंग्स नाल ड्राइव किए जाते हैं डाउट फीयर एंजाइटी ठीक है सेम ऑप्शन च गल कही गई है ड्रिवन बाय फीलिंग्स लाइक फीयर 9th देखो कंटिन्यूअस सक्सैस द आंसर इज बी वरीज पीपल ठीक है इत्थे देखो अपने 4th पैराग्राफ के अंडर जो थर्ड आता है इफ थिंग्स टर्न आउट वैल फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर इज़ अ फर्दर एंग्जाइटी अगर थिंग्स टर्न आउट वैल मतलब सारा कुछ सही हो रहा सक्सैसफुली हो रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट मीनस कंटीन्यूअसली अगर कंटीन्यूअसली सक्सैस हो रही है तो ये करके की होंगे फर्दर एंग्जाइटी होर वरीज हो जाती है एंग्जाइटी मीनस वरीज सो ठीक है 9th का आंसर है वरीज पीपल 10 to 13 देखो 10th इज नॉट गिवन 11th है people perform certain rituals to try to avoid failure the answer is yes and it's in your 4th paragraph ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖੋ Nostradamus sorry ਇੱਥੇ people find themselves propitiating the gods not walking on lines on the payments performing rituals before public performances है ना मतलब की करते हैं रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं सो दैट मतलब अगर थिंग्स रोंग चलियां भी जान ठीक है तो वो ना ब्लेम हो रिचुअल ब्लेम हो ठीक है दैट मीनस वो मतलब एक तरीके कुछ सेफ गार्ड ही करते हैं सारा भी असं रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट सानू सक्सैस मिले ठीक है या फिर फेलियर अवॉइड करने सो द आंसर फॉर 11th इज यस 12th देखो एंगजाइटी इन डेली लाइफ इज़ वट वी वॉन्ट कहते एंगजाइटी डेली लाइफ ही ऐसी चीज़ है जो अपन चाहिए है ठीक है मतलब डेली लाइफ च एंगजाइटी लोग चाहते हैं ठीक है द आंसर फॉर 12th इज ऑल्सो यस देखो इतने लिखा होया वी क्रेव फॉर एंड आर फैड अ डेली डाइट ऑफ एंगजाइटी वी क्रेव फॉर क्रेव करना मतलब किसी चीज़ को बहुत ही चाहना भी हाँ मैंने ये चीज़ मिले ठीक है कि लोग क्रेव करते हैं कि वास्ते एंगजाइटी ਲਈ सेम गल इतने कही गई है एंगजाइटी इज डेली लाइफ इज़ वट वी वॉन्ट लोग चाहते हैं एंगजाइटी ठीक है सो द आंसर फॉर 12th इज यस 13th इज नॉट गिवन दैन आ जो पैराग्राफ नंबर 2 ते देखो इहदा 14th क्वेश्चन 14th क्वेश्चन देखो द क्रॉप मेक्स the crow makes the cut in the leaf then dash away a section the answer is rips away a section first of all अपने सारे पैराग्राफ्स ਨੂੰ 1 to 11 नंबरिंग दे दो एंड ਹੁਣ आ जाओ 5th पैराग्राफ विच देखो इत्थे लिखा होया
The crow nips the leaf and drips along the fiber, makes another cut and tears again, repeating until it has a tool with usually 2, 3 or 4 steps. Crow की करदा है, लीफ च कट बनांदा है, ठीक है, अवे अ सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन along the fibers, ठीक है, the answer is rips along the fibers, ठीक है. The crow makes a cut in the leaf, ठीक है, then rips away a section, एक section ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, rip ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ठीक है. पहला nips the leaf, that means cuts the leaf, rips along the fiber, ठीक है, then fair makes another cut and tears again, ठीक है. So the answer is rips. 15th देखो, dash leaf, केड़े leaves ने ਇਹ? The answer is pandanus and it's in your 4th paragraph. देखो, birds rip the leaves of pandanus tree, ठीक है, pandanus tree the leaves ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, rip ਕਰਦੇ ਨੇ. So the answer for 15th is pandanus, ठीक है जी. Then देखो 16th, evolution of the crow's leaf tool, और टूल बारे दसना है कि वो की किद्दां दा सीगा, ठीक है. 16th का आंसर है जी वाइड, ठीक है. दैन नैरो नैक्सट च लिखिया ही होया है, ठीक है. नैक्सट विच की है, डैश टूल विद 2, 3 और 4 स्टैप्स, की सी टेपर्ड, ठीक है. मतलब आप तीनों दी करैक्टरिस्टिक्स लिखनिया सी, वाइड आप लिखी, नैरो आप नैरो हैगी सी ऑलरेडी, बची कड़ी टेपर्ड, सो द आंसर इज टेपर्ड. ओके जी. दैन आ जाओ 18th to 22nd. 18th देखो, मतलब इन्हां च दसना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरिंग टू क्रोज, आप दसना है कि ए अगर ता होगा अगर स्टडी बाय हंट एंड ग्रे सी, बी इफ स्टडी बाय कैसलनिक, चैपल एंड वायर सी इज बोथ स्टडीज. 18th देखो, कैन शेयर टूल मेकिंग स्किल्स विद अदर क्रोज, द आंसर फॉर इट इज ए एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 6. देखो इतने लिखा होया, leaf tool manufacture is an example of the culture. The birds lean through example and their tool making wisdom grows in sophistication down the generations, ठीक है जी. मतलब की ने ये डाउन द जनरेशन, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन की ने जड़ियाँ टूल मेकिंग स्किल्स विजडम है और पास डाउन की जाती है, दैट मीनस शेयर की जाती है, ठीक है. सेम गल उत्थे कह रहे हैं, ठीक है. कैन शेयर टूल मेकिंग स्किल विद अदर क्रोज, ठीक है. एंड ये आंसर क्यों है, क्योंकि ये की स्टडी सीगी, डॉक्टर ग्रे एंड ऑल उन्होंने सब की स्टडी सीगी, ठीक है. सो द आंसर फॉर इट इज़ ए. 19th देखो, कैन मेक स्पैशल टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर परपज़, कहते स्पैशल टूल्स बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर परपज़ लिए क्रोज ने जड़े, ठीक है. यदा आंसर है सी, ये दोनों स्टडीज़ ने गल कही सी, ठीक है. देखो एक तो पैराग्राफ नंबर 4th विच, पैराग्राफ नंबर 4th विच देखो इत्थे लिखा होया, Dr. Gravin Hunt and Dr. Russell Gray have spent past decades studying feather technology in New Caledonia, 900 miles, ठीक है. After an intensive field survey of local crow industry, the scientists found that the birds rip the leaves of pandanus tree to fashion 3 distinct types of tools and tool for grub insect extraction, wide, narrow and tapered, ठीक है. तो इतने सारिया दी दसिया हुई ने करैक्टरिस्टिक्स दसिया हुई ने कि जोड़े टूल्स सीगे स्पैशल परपज़ लिए डिज़ाइन किए गए सी, ठीक है. फरदर 8th पैराग्राफ भी इस चीज़ की गल हो रही है, ठीक है. देखो जिते लिखा होया, Betty began making tools after her partner snatched away a hook made for her by the researchers, forcing her to make her own from garden wire to fish out morsels from a tube, ठीक है. इत्थे भी एक पर्टिकुलर दसिया होया कि हाँ आ वाला टूल्स आ वाले स्पैशल परपज़ नहीं बनया सी, ठीक है. ये उन्हां दी स्टडी सीगी किन्हां दी, देखो इस पैराग्राफ च इन्हां दी स्टडी की गल हो रही है, कैसलनिक एंड ऑल, ठीक है. एंड उपर किन्हां दी स्टडी की गल हो रही सी, हंट एंड ग्रे दी, ठीक है. सो इस दोनों स्टडीज़ ने कहा सीगा गल, ठीक है. 19th आंसर सी. 20th देखो, कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय अंडरस्टैंडिंग रादर दैन लर्निंग, कहते प्रॉब्लम्स बाय अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर सकते हैं रादर दैन लर्निंग, द आंसर इज़ बी एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 7. देखो इत्थे गल हो रही है आही डॉक्टर जैकी चैपल एंड एलेक्स वियर विच हैज़ टर्नड बैटी द न्यू कैलेडोनियन क्रो इनटू स्टार बाय रिवीलिंग हर टू बी फर्स्ट एनिमल अदर दैन मैन टू शो अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफैक्ट, कि जेड़े सीगे
ਚੈਪਲ ਐਂਡ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ, ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 20th 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ 20th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ। 21st ਦੇਖੋ, ਕੈਨ ਮੇਕ ਟੂਲਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੋਜ਼ ਕੈਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਟੂਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੋਜ਼। ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇ ਟੂਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇਨ ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਅਨ, ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇਨ ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਅਨ ਕਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲਸ ਨੇਗੇ, ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਗ੍ਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਸਲਨਿਕ added that at least in terms of tool making the Pacific crows are smarter than their British cousins। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 21st ਇਜ਼ ਸੀ। 22nd ਦੇਖੋ, ਕੈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁਕਸ ਟੂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਫੂਡ, ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ they often strip a twig of leaves and cut it off just below shortened offshoot to create a hook। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ she wedged the end of wire into the base of food and turned her head to form the hook, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕੈਸਲਨਿਕ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰੋਜ਼ ਨੇ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਹੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 22nd ਇਜ਼ ਸੀ। 23rd ਦੇਖੋ, it used to be thought that only human beings use tool, even after we learned that many other dash also do it। the answer is animals and it's in your paragraph number 2nd। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ then it was found that many animals also used them, ਠੀਕ ਹੈ। thinkers as diverse as Freud, Engels and Thomas Carlyle once pointed to the use of tools as being a defining behavior of human beings। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ it was still believed that only humans were intelligent enough to gradually evolve better tools। a study of crows in dash, a study of crows in ਕਿਸੇ place ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। and it's in your the answer ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਆ and it's in your paragraph number 3rd। ਦੇਖੋ a new study shows that crows of New Caledonia are inventive। ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਆ ਦੇ crows ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। so the answer is ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਆ। then ਦੇਖੋ shows that these birds use leaf tool which has been evolved over several generations। a crow in another study has shown the human evolved over several generations। a crow in another study has shown the human like ability to understand dash। the answer is physical laws and it's in your paragraph number 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼। although chimps use sticks in experiments they have not shown any human like understanding of basic physical laws, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਪਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੋਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਚਿੰਪਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਦੋ ਚਿੰਪਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੋਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਨਾਟ ਈਵਨ ਡੈਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਟ ਈਵਨ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੋਡ, ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 3rd। coming into a world a little known island community comes in front from the cold।
देखो जी, क्वेश्चन नंबर 27th, the writer describes the islands of Tristan da Cunha as dash. The answer is D, unknown to most members of the public. First of all, अपने सारे paragraphs ਨੂੰ 1 to 10 numbering दे दो. So the answer is in your paragraph number 1. ठीक है, देखो back in early 1961, few outside corridors of dwindling British power had heard of the archipelago centered on the main island of Tristan da Cunha. ठीक है, मतलब बहुत घੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਨਨੋਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ 28th, ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਈਲੈਂਡਰਸ। ਰਾਈਟਰ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ, ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜਡ ਮੈਸੇजेस ਵਿਦ ਬੋਟਸ ਦੈਟ ਵੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੈਮ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 3rd। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, communications with the outside world relied predominantly on signals to passing fishing boats and the annual visit to the vessel। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਏ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਏ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਸਿੰਗ ਬੋਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਆ ਜੋ 29 to 34। 29th is people living in Tristan da Cunha are totally self sufficient। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, the annual visit of vessel that supplied the islanders with the goods they could not produce themselves। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਨੂਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਸਲਸ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਨੂਅਲੀ ਸ਼ਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੁੱਡਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ ਲਈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 29th ਇਜ਼ ਨੋ। 30th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। 31st ਦੇਖੋ, some islanders were reluctant to return after the volcanic eruption। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ after volcanic eruption। the answer is yes and it's in your paragraph number 7th। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, the vast majority of islanders voted to return। vast majority ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, not all but majority ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ all of the islanders voted to return, majority ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੱਲ 31st 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, some islanders were reluctant to return after volcanic eruption। so the answer for 31st is yes। 32nd देखो, the selling of postage stamps has generated revenue for the islanders। postage stamps ਦੀ selling ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਨੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੀ for the islanders। it's in your paragraph number 8th। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, the last of returning islanders arrived in November 1963 and with the rebuilding of crawfish canning industry and a growing demand for islands stamps amongst dedicated collectors following the publicity caused the volcanic eruption, the local economy soon recovered। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਸ ਤੋਂ ਰਿਵੈਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 32 ਇਜ਼ ਯੈਸ। 33 ਐਂਡ 34 ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। 35 to 40 जी समरी कंप्लीट करनी है। देखो, फर्स्ट colonized in the early part of 19th century, Tristan da Cunha remained unknown to many people in the rest of the world until a dash forced the small population of this remote island to evacuate the rooms। ठीक है, the answer for 35th is volcanic eruption। देखो अपने paragraph number 2 विच, it would take a dramatic volcanic eruption and an emergency evacuation that would grab the attention of media to bring attention to this mysterious outpost of British Empire। कि मतलब कि ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਰਪਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਦੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 35th ਇਜ਼ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਰਪਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ
evacuate their homes and brought their existence to the attention of the dash. किस दी attention मिली उन्होंने? मीडिया दी. So the answer for 36th is the media. ठीक है. Then आ जाओ. After spending 2 years as refugees in the dash, the British government reluctantly allowed them to return to the island once it has been established that the danger had passed. ठीक है. The answer for it is England and it's in your paragraph number 5. देखो इत्थे लिखा होया the entire population eventually found themselves in England. ठीक है. जदों उत्थे लाइक की हो गया, evacuation हो गई. ठीक है. सारी उत्थे आइलैंड ते प्रॉब्लम आ गई. तो एंटायर पॉपुलेशन सी जिहड़ी उन्हें अपने आप नूं कित्थे पाया? इंग्लैंड विच. दैट मीनस वो कित्थे रह रहे सी? इंग्लैंड विच. Where they met with unwanted and unexpected attention from the media, they were housed at a military camp just outside the port of Southampton. ठीक है. तो कित्थे रह रहे सीगे? इंग्लैंड च. ठीक है. देखो 38th. The dash of the island improved when rebuilding work has been completed, partly because of their new interests in dash. The answer is 38th is local economy. कहते local economy देखो local economy of the island improved. कदों improve हुई? ठीक है. इसका आंसर है जी अपने को पैराग्राफ नंबर 8 विच. देखो की हुई सी improve की हुई सीगी उन्हां दी local economy soon recovered या improve. ठीक है. So the answer for 38th is economy या local economy. ठीक है. then because of the new interest in लोगों का किस चीज़ से नवा इंटरस्ट आया सी? आइलैंड स्टैम्प्स च. ठीक है. यदि क्योंकि उस टाइम यदि पॉपुलैरिटी बढ़ रही सी, सो लोगों का नवा इंटरस्ट सी. द आंसर फॉर 39th इज आइलैंड स्टैम्प्स. ठीक है. then disaster was to strike the island again. ठीक है. कहते डिजास्टर उस आइलैंड पे अगेन आया नियरली 40 years later when a dash destroyed many buildings on the island. The answer is hurricane. ठीक है. देखो इत्थे लिखा है 9th पैराग्राफ च. On May 23rd a hurricane tore through the area. It caused extensive damage, knocking out the radio station, satellite telephone link as well as leaving the islanders without electricity. Like इन्ने उन्हां दी इत्थे डैमेज हो गई किस चीज़ करके? हरिकेन करके. So the answer for 40th is hurricane. This is the end of your reading. Thank you.